Hello everyone, welcome to Simplified. CDFD, that is the Center for DNA Fingerprinting and Diagnostic के PhD application forms जो है वो रिलीज हो चुके हैं for 2023. So let us see the notification. जब आप CDFD की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, that is cdfd.org.in. So यहाँ पर हम नोटिफिकेशन देख सकते हैं in the student zone. यहाँ पर दे रखा है एडमिशन फॉर रिसर्च स्कॉलर्स प्रोग्राम RSP 2023. तो जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं यू विल बी डायरेक्टेड टू अ न्यू पेज, और वो पेज ये रहेगा, दैट इज सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक. इट्स लोकेटेड इन हैदराबाद. एंड यहाँ पर दे रखा है एडवर्टीजमेंट, नोटिफिकेशन, गाइडलाइंस फॉर फिलिंग द फॉर्म एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स आर ऑल्सो गिवन. सो चलिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं. द लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का वो रहेगा आपका 14th December 2022. एंड डिस्प्ले ऑफ शॉर्टलिस्ट फॉर इंटरव्यू दैट विल बी इन द लास्ट वीक ऑफ December 2022. और जो डेट ऑफ इंटरव्यू होगा वो अराउंड लेट जनवरी या फिर अर्ली फरवरी भी हो सकता है ऑन 2023. सो ये डेट्स जो रहेंगे दे कैन बी अनाउंस्ड लेटर. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे ही हम एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन क्लिक करते हैं सो यू विल बी डायरेक्टेड टू अ न्यू पेज हियर. यहाँ पर हम देख सकते हैं नोटिफिकेशन दे रखा है फॉर द एडमिशन फॉर रिसर्च स्कॉलर्स प्रोग्राम 2023. सो हियर दे हैव रिटन दैट CDFD Hyderabad is a premier institute in the country which provides services in DNA fingerprinting and diagnostics and conducts cutting-edge basic and translational research in frontier areas of modern biology. So इनके research areas कौन-कौन से हैं? Cell and molecular biology, computational biology, disease biology, genetics, molecular biology, immunology. So अगर आपको further details चाहिए for the research areas, then also you can go the website of the CDFD, that is www.cdfd.org.in. So they are inviting the applications from highly motivated candidates for admission for the research scholar program that will be beginning from February or March 2023. So let us see the eligibility criteria क्या है. Eligibility criteria: to be eligible for admission to CDFD, the candidate must have, सबसे पहले जो होना चाहिए वो है मास्टर्स डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर और MBBS फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट. सेकेंड जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो ये है, क्वालिफाइड फॉर JRF, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप फ्रॉम CSIR, UGC, DBT, ICMR or Inspire or JEST or UGC, RGNF or any other similar exam with fellowship. Candidates having qualified for Project JRF under ICMR funded project scheme or DBT JRF net with a BTech degree or DBT JRF net under DBT B category list or LS net, they are not eligible to apply. Okay, so valid fellowship एक absolute requirement है PhD pursue करने के लिए at the CDFD. However, a candidate is allowed to submit the application without having qualified valid fellowship. अगर fellowship result जो है awaited है, then the candidate must update the fellowship status positively before the interview via the email, that is they have given the link. So coming to the selection procedure कैसे होगा? It will be based on the interview via video conference, जो कि आपका अराउंड लेट जनवरी या अर्ली फरवरी को कंडक्ट होगा. एग्जैक्ट डेट वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे only to the shortlisted candidates. And list of candidates shortlisted for interview will be displayed in the last week of December. Last week of December में वो list release कर देंगे. Then coming to the application procedure. So interested candidates
who fulfill above condition must सबसे पहले उनको register करना है their names for the research scholar program 2023 by applying in the prescribed application form online. और जो लिंक रहेगा वो ये रहेगा, उन्होंने दे रखा है यहाँ पर. एंड देन आपको अपने सॉफ्ट कॉपीज सर्टिफिकेट्स के अपलोड करने हैं. दैट इज डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, रिजर्वेशन कैटेगरी इफ एप्लीकेबल, एंड फेलोशिप एग्जाम क्वालिफाइड. और अगर कोई क्वेरी है देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट दिस ईमेल. देन ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटी विल बी क्लोज्ड ऑन December 14, जैसे कि हमने इम्पॉर्टेंट डेट्स में देख रखा है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स दे हैव गिवन. अगेन हम लोगों ने पहले ही देख रखा है कि December 14 लास्ट डेट होगा. लास्ट वीक ऑफ December में आपके जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो हो जाएगा. एंड डेट ऑफ इंटरव्यू लेट जनवरी और अर्ली फरवरी रहेगा. दे विल इन्फॉर्म द डेट्स. देन कमिंग टू द गाइडलाइंस फॉर फिलिंग द फॉर्म. तो अगर गाइडलाइन देखेंगे तो यहाँ पर गाइडलाइंस दे रखा है फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन. Interested candidates are advised to go through entire advertisement, detailed terms and conditions, then only you are able to fill the online form. सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है. You have to go to new registration button in the login section में, and then आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है during registration and preserve it for future logins, application submission और downloading. देन जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपको एक मैसेज आएगा विद द रजिस्ट्रेशन ID एंड डिटेल्स ऑफ द पोस्ट अप्लाइड विल बी डिस्प्लेड. सो द कैंडिडेट इज एडवाइज्ड टू सेव दिस इंफॉर्मेशन केयरफुली इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट और स्क्रीनशॉट. नो सेपरेट ईमेल और SMS confirmation will be sent regarding successful completion of application. Then coming to candidates, note that registration ID along with the created password for accessing online application form are important. Okay, then candidate should register with valid email address as the same would be considered throughout the recruitment process. Then आपको documents क्या क्या submit करने हैं. Before starting the process of filling the application, the candidate should keep ready the following documents. क्या क्या documents होंगे? सबसे पहले आपका valid email ID होना चाहिए and mobile number. Second, आपका scanned copy of the recent passport size color photograph. And dimensions उन्होंने दे रखा है. That is 300 pixel width, 400 pixel height, maximum 100 KB size. Then clearly visible scanned signature भी आपके पास ready होना चाहिए. Scanned certificate copies होने चाहिए of proof of date of birth, SSC, inter, bachelor's, postgraduate degree certificates, project training certificate, and they all should be combined as a single PDF file. Then qualifying degree certificate or hall ticket if the result is awaited as a PDF file. And then category certificate also if applicable. Other document if any as a PDF file. Then file type and maximum file size they have given here, you can read them. Then candidates to ensure that the same photograph, mobile number, email ID are used throughout this recruitment process. So application filling and submission. So then जैसे ही आपने register किया होगा, then you can log in to the portal using your registration ID and password. Then candidate should ensure that they are filling the correct information in the form and will be held responsible for any typographical or errors. Okay. Then coming to candidates can log in any number of times and navigate. Then you have to save your information by clicking save. Then after filling the information under all tab headings, please click upload document. Further, you will have to click submit. And upon successful submission of application ID in the format this,
is generated and a confirmation message with the application ID and the link they will provide, which will be displayed to you. Then candidates note that they can log in to the portal even after submission of the application so that they can view or they can download their application forms. एक बार अगर application ID generate हो जाएगा, so there is no provision to edit the application form. Okay, so this was all about the CDFD PhD program. Thank you.